Vaibhav, let's talk about your journey to Poland. ये आपको कैसे मिला? Sure. How did you get into this University of Economics, Poland? And you're a marketing guy, by the way. How did you get to Poland University? That's number one. How much scholarship you are getting over there, and how is the entire education system in Poland? Sure. So starting from the basic, that how I got this scholarship. So first of all, there was an email that came to my mail ID ki, there is one opportunity that you will be studying in Poland, Spain, or Croatia. There were 3 countries and 1 scholarship. The scholarship said that you will be getting fully 100% scholarship from your traveling expense to your accommodation expense. So it's 100% scholarship. Yes, it's 100% scholarship. I think I have to just pay for my visa. So yeah, that was nice, and I thought ki I have never applied. This is a fact that मैंने आज तक कोई भी scholarship में apply नहीं किया है. This was the first one और मेरे को लग गया. So and उसका भी decision बताता हूँ आपको कि उसमें criteria लिखा था कि people will get shortlisted based on merit and merit will be based on marks. So I thought कि नहीं, मेरा स्कोर अच्छा है marks में, let's try at least कि interview देके वापस आ जाऊंगा, select हुआ नहीं हुआ बात की बात. And I went for the interview. There were 4 people. My dean, my principal, my international cell head. They took my interview and everything. Interview हुआ, मेरा resume गया इधर, मतलब इधर आया होगा in University of Economics में. And इधर के dean जो होते हैं उन लोगों ने check किया, ये सब सारी process हुई. उसके बाद finally short listing आया कि I have got the scholarship and I'll be studying in Poland. और मुझे acceptance letter मिल गया. Thereafter I got the visa and I finally came here after 2.5 months of all the preparations. And मैं इधर आया in February, in mid of February, 15th के आसपास. And I settled here. मैंने इधर सब कुछ पहले से देख रखा था कि किधर जाना है, किधर रहना और क्या खाना पीना है, everything. And after I came here, I went to the university for the formalities. Okay, by the way, the scholarship amount I got was 4,500, and it comes under Erasmus Plus scholarship. And this scholarship is actually funded by European Union. So वो लोग तय करते हैं कि based on your merit and based on the college where you will be getting in all over the Europe. It may be the Italy, it may be Spain, it may be France, Poland, or कुछ भी हो सकता है. In short. The 4,500 euros. So this was for 4.5 months practically, and अभी बात करें तो 5 months के लिए मेरा visa है. Okay. So the scholarship that you got, that's in euro, isn't it? Not a dollar amount, right? Yeah. Okay, perfect. Yeah, no, it's in euro. Yeah, it's in euros. Perfect. Yeah, perfect. but इधर आके I have to open my bank account, which should be over here. In a Polish bank account, और उसके बाद they'll transfer the money. वो सब हुआ, and now I'm living here for like 2.5 months now. And ये सारा process हुआ, and now coming back to your point कि इधर का education system. So the education system is 100% different, I would say. हमारे यहाँ पे होता है कि when you select कोई भी एक course, for example mechanical engineering हो गया, तो आपके साथ दूसरे 60 बच्चे या 160 बच्चे जिसने भी मैकेनिकल इंजीनियर लिया है 4 साल के लिए वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि आपने पढ़े. You will get nothing else. और इससे भी अच्छा कोई कॉलेज में होता है कि कुछ सेमेस्टर्स में आपको ऑप्शनल दे देते हैं कि उसमें सिलेक्ट कर लो आप. ठीक है, लेकिन here the things are 100% different. मैं इधर जब आया उसके पहले मेरे से लर्निंग एग्रीमेंट साइन करवाया था. So in learning agreement, I have to select the subjects कि what will I'll be studying here और कौन से subjects में लेने वाला हूँ. तो when I go in the class, in every class, I'll see new faces. कोई एक जैसा नहीं मिलेगा. फाइनेंस वाला बंदा मेरे साथ बैठा है. अच्छा, वो भी एक शॉकिंग फैक्ट है कि बैचलर का बंदा मास्टर्स वालों के साथ बैठा है. Oh, okay. So it's not about what course you do, it's about what subject you select to go where in your industry. आपको जाना है अगर बैंकिंग में तो 3 साल मिल रहा है आपको.
3 साल के अंदर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो कि बैंक वाला आपका प्रोफाइल देके आपको लेके जाए. So it's 100% on you. तो it depends on students की what they select. बाकी क्लासरूम वगैरह तो सब नॉर्मल रहते हैं. अपने भी यहाँ नाउ इंडिया इज डेवलप्ड ऑफ कोर्स एंड द क्लासरूम आर स्मार्ट क्लास. सो इधर भी सेम ही है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है. बाकी इट्स द सेम. एंड प्रोफेसर्स आते हैं एंड यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइम. पूरे महीने का, पूरे मेरा सेमेस्टर का टाइम टेबल मिल जाता है इन द फर्स्ट डे ओनली. ये दिन पे, ये डेट पे, ये इतने घंटे पे आपको आना है. So in that hours you go in the university, sit in the class, study and get out. So यही process होता है. कुछ fix हर दिन classes नहीं होती कि इधर आना ही आना है. So this is I think flexibility कि आपको अगर कुछ काम करना है then you are free. Most इधर देखा है कि मैंने जो Polish student है, जो इधर ही रहते हैं, मतलब वो full time job कर रहे हैं पढ़ने के साथ साथ. So that is better thing, क्योंकि इधर के लोग को अगर कंपनी बोलती है कि कम विद 2 years of experience, तो हाँ उसके पास है. Right. नहीं, एक्चुअली फॉरेन यूनिवर्सिटी का ना ये होता है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर मल्टी डायमेंशनल. So they believe in work ethics, they believe in your practical knowledge. Also जो तूने बात की ना बैचलर सिटिंग विद द मास्टर्स, ये वहाँ का एक एजुकेशन कल्चर है जहाँ पे they go according to the subject and not according to the degree as such, UG PG. तो ये बहुत अच्छा चीज है जो एक एक्सपोजर देता है. रिमेंबर इन IIM अहमदाबाद पीजीपी के साथ पीएचडी के बच्चे भी आके बैठते हैं एंड वाइस वर्सा, बिकॉज सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो वहां पे पढ़ाई में बहुत मजा आता है. हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली. ये तेरे लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस रहेगा ना. आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी एंजॉयिंग इट. कूल. Yeah, of course. Perfect. So what about the placement? Like, are you gonna come back to Mumbai and then sit for the placement यहाँ पे, or you are hunting placement वहाँ पे? Actually, I am 100% or you can say totally in touch with my college placement department कि उधर से कोई placement आता है, क्योंकि as you have already mentioned कि हमारा ये placement गया international, so international placements आते ही हैं. So I am connected with the placement committee कि उनके साथ मुझे अगर कोई मिल जाता है, तो जो टर्म्स कंडीशन होते हैं इधर क्या है कि if you get the employment you will have to sign so many contracts. It's not just about the work visa, but it's so many other things apart from salary. So अगर वो कॉलेज से ही हो जाता है ना, then process is quite easier for you. और उसके अलावा I am also applying here as well कि मेरा जो अभी तक का पीरियड है उसमें कोई MNC मिल जाती है. तो MNC is kind of thing कि वो सारे MNC उसी को बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, दूसरे देश में भी अवेलेबल है. हाँ, तो then I'll make sure कि वो मुझे अच्छा प्लेसमेंट अगर देती है then I'll continue with this, or else I have to come back to Mumbai and find the placement department will assist me now. Right. No, I think placement should not be the problem for you, because even if you get back to the campus, the point is that तेरा ये जो अभी रेज्यूमे पे ये जो लगेगा ना, पोलैंड यूनिवर्सिटी का तेरा जो ये एक प्राइम मिनिस्टर जो तूने रादर एक सेमेस्टर जो तूने वहां पे करा है, that's going to be a really good advantage to you. And मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, it doesn't matter where have you done your MBA from, तेरा भी प्रोफाइल इतना versatile बन गया है that you can definitely go for global companies also. So those who are listening to this video, those who are watching Vaibhav, ये चीजें बहुत मैटर करती है. जब आप MBA में जाते हो, आपके जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, जो इमर्जन प्रोग्राम होते हैं, इसकी वैल्यू इसलिए होती है ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो वर्सेटाइल बने, वो मल्टी डायमेंशनल बने, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच देन इवेंचुअली आपको उसके फ्रूट्स मिलते हैं 3-4 साल के बाद. बट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज जितने भी स्टूडेंट एक्सचेंज देखे हैं, जितने भी इमर्जन प्रोग्राम हमने देखे हैं, वहां पे बच्चों को पे करना पड़ता है 4-5-6 लाख, राइट? देखा जाए तो अगर यहाँ पे तुझे 4,500 यूरो की स्कॉलरशिप मिली है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू बाय द वे वैभव, एक बार ना हमें तेरी पूरी प्रोफाइल बता दे. 10th 12th ग्रेजुएशन के तेरे परसेंटेज, MBA फर्स्ट ईयर के तेरे परसेंटेज, and if there is anything on your resume. ठीक है. So I'll start with first academic and I'll talk work experience after that. So is that fine? ठीक है. So my 10th 12th is like 82 and 71 respectively. And then after I got graduate in mechanical engineering, BTech mechanical engineering किया मैंने Parallel University. It's in Vadodara, Gujarat. And in that I got like 7 CGPA out of 10. And apart from that, graduation के बाद, okay, first I'll talk about academics. So in MBA first year is like 83 or 84 percentage. That's huge. That is huge. Yeah. Yeah. And now after like
MBA के पहले I was working as a production manager in Rajkot in here a steel industry. So for 1.5 year I have worked here as a manager, and then I studied for this marketing management. And while I was studying, I have done more than at least 6 to 7 internships in the tenure of 1.5 year of my MBA. So I have worked for education company. I have worked for consultancy firms and marketing firms as well. So, but I will say कि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया अपने market research में, because that's my profile and that's what I'm looking forward in my career path. So I have worked for like you can say 13 months or 14 months in just market research, where you're doing various kind of projects. And I really feel that due to this kind of projects कि मैं already MNC company के साथ multinational projects कर ही रहा हूँ. Exactly. So that was the diverse thing in my profile कि हाँ अगर इसको कहीं पे जाना है तो that would not be a problem, because I have already interacted with like Philippines, you can tell Singaporean clients. I have worked with one UK based firm also. So those kind of things help me a lot. And again, these whole projects was again under guidance of a professor from my college. Wow. So that was Amazing. also nice. So guys, those who are listening to him, you need to understand that when you try to build your profile, you need to build your profile in a very decent, rather, in a very focused way. हर एक चीज नहीं है आप कर सकते. जैसे इसने कहा कि मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ भी काम करा, मैंने एक्सपर्ट इंडस्ट्री के साथ भी काम करा, बट मैंने मार्केट रिसर्च में भी काम करा बिकॉज दैट वाज माय मेन डोमेन. तो अब जब आप प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बात करोगे, इंटर्नशिप वगैरह के बारे में बात करोगे, इट इज ऑलवेज गुड दैट यू डू एन इंटर्नशिप व्हिच बेसिकली सिंक्स अप विद योर एमबीए का स्पेशलाइजेशन. मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा. एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली व्हाट यू डिड. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट विवेकानंद इंस्टीट्यूट? जो 1-1.5 साल मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन हुआ होगा कोविड की वजह से. हाँ, कोविड की वजह से ऑनलाइन था, बट आई रियली से दैट कि ऑनलाइन ही था, लेकिन आई वाज नॉट सिटिंग फॉर अ सिंगल मिनट एट माय होम. अगर लेक्चर्स है या फिर उसका कोई प्रोजेक्ट है, सारा कुछ लर्निंग है ना, जस्ट थियरी बेसिस पे नहीं होता इधर. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट इवन इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सो मेनी लॉट्स ऑफ केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स. तो उसमें ही आप अगर ऑफलाइन होता ना, तो आई रियली फील दैट कि इतने केस स्टडीज सोल्व नहीं होते या इतने प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते. इट वाज जस्ट बिकॉज वी वर एट होम. रात के 2 बजे भी इट्स नॉट लाइक कि आप कॉलेज में नहीं हो, यू विल नॉट वर्क. घर पे हो तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क. ट्रू, वेरी ट्रू. कि अगले दिन का डेडलाइन दे दिया, बोल रहे आप घर पे, तो आप क्या कर रहे हो घर पे? यू जस्ट फिनिश दिस. आई फील दैट कि कोरोना की वजह से हमको थोड़ा ज्यादा सीखने को मिला है. Not just me, but I feel everyone in my classmate who will see probably this video will agree with this. Cool यार, so awesome. It's been nice. No, that's a really good perspective, because ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहेंगे कि यार देखो, मतलब I'm being very straightforward यहाँ पे. ये एक बच्चा है जो कहता है कि कोरोना की वजह से मुझे ज्यादा सीखने को मिला. वहां पे ऐसी भी जनता है मार्केट में वैभव जो ये कहेगी कोरोना की वजह से हमें ज्यादा पार्टियां करने को मिली, बिकॉज बिल्कुल में जा नहीं रहा. राइट. सो यार हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है. बंदे ने हेल्प किया बहुत, रादर बच्चे ने बहुत खुद को हेल्प किया, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करी, और इसने बहुत मेहनत करी. आज इसी की वजह से ये वहां पे जाके बैठा है. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे से दैट tier 1 बीज को ज्यादा बेस्ट एंड ऑल दैट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो डाउट दैट्स द करेक्ट थिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे एक स्टूडेंट की मेहनत, उसका एक एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है उस स्टूडेंट के सक्सेस के लिए. तो मेरे ख्याल से यू आर अ राइट एग्जांपल ऑफ दैट वैभव, कि हासिल करना तो जरूरी है, तभी जाके सपने पूरे होते हैं. यू नेवर थॉट ना, तूने पहले डिसाइड नहीं करा होगा ना कि तुझे पोलैंड वगैरह जाने को मिलेगा? 1.5 साल पहले का वैभव नहीं, not at all. Actually, I would like to say here, when you said that tier 1, tier 2 college thing, I'll be really honest. That this was my thought when I was looking for an admission. कि अगर मुझे कुछ भी करके एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल 82 नहीं आता मुझे कैट में, मुझे मिल जाता है 90+, और मुझे मिल जाता है समझो कोई अच्छा कॉलेज.
बट आई रियली फील कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है. आई वॉज नॉट दैट मच कैपेबल कि मैं मार्केटिंग का नॉलेज पूरा ग्रास्प कर सकूं. अगर सोचो आप मेरे को अगर IIM कलकत्ता मिल जाता, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग अ केस, कि अगर मुझे IIM कलकत्ता मिल जाता, उधर स्टूडेंट्स don't come just because of academics, they come from their experience, तभी जाके उधर मिलते हैं. अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है ना, but if you are not able to grasp all the things that is being said in the college, तो आपका बस एक लॉटरी लगा है कि 2 साल बाद गायब हो जाने वाला है. That's it. Very गायब हो straightforward. जाने वाला है. तो मेरे वीडियोस देखता था क्या? इसलिए Have you yeah, I really have watched your videos. Man, that was really straightforward, you know, and I really love it because you know जो तूने बोला वो 100% भाई मेरे बात वो सही बात है. 100% वो truth है. It's just that जो मानता है वो मानता है, नहीं तो बच्चे थोड़े से इग्नोर मार देते हैं. But yeah, 100% it's a true thing, man. Amazing. Great attitude, yeah. Great attitude. Vaibhav, thank you so much for taking some time out. I wish you all the very best. अच्छा करना वहाँ पे. कॉलेज का और देश का दोनों का नाम रोशन करना. Surely. Yeah, thanks, man. Thanks. You take care of yourself. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.